शुरू करें भाई? हाँ ठीक है। मैं हेलो। स्क्रीन शेयर हेलो। कर लेता हूँ। हाँ 2 मिनट ज्योतिबा, ठीक है। हाँ हाँ। हेलो, जय भीम everyone. My name is Rahul. So I welcome you all today in our Bluebird Foreign Education and Career Series. Today we have our friend Jyotirao. He is alumni of Nalanda Academy, and he has done his master degree in climate change and sustainability studies from TISS Mumbai. Now he is doing his second master in forestry in Australian National University, Australia. So Jyotiba, please share your experience and your journey with our students so they can also be motivated. Yeah. Thank you very much, Rahul bhai. And I would like to thank and acknowledge the efforts by Digital Nalanda and Nalanda Academy team to organize such a great sessions to motivate students like me and lots of my brothers and sisters. And I'm very honored to like share my experience to Nalanda Academy students and students from like around the country. I will share my screen. I have made a small presentation about my experience. I hope it's visible. Okay. Oh, where is it? Wait. Okay. So I will start with like with my background, like where I'm from and what education and which education I took. So, and I will ask you also, guys, like what you want to do, which universities or which courses you want to do, so that we so that this session will be like interactive. Yeah. So, okay. So, in today's session, I'll be sharing my journey and temporary barriers that I face, and um, I think lots of people like me and you guys are also facing the same and similar barriers. And based on my experience, I'll be sharing how I overcome these barriers and how you can also overcome these barriers to pursue abroad education. And then I have like few links as a resources that you can use for your masters and PhD application. And then we will have question and answer sessions. You can write your questions in the chat box, or you can just unmute yourself and pop out. So this is me. And so I did my schooling from the Jilla Parishad school that is in my village, which is Sarkari school, and I studied there till 8th standard, and then then I took my further education till 12th standard in the nearby village, which is Kuhi. And considering my socio-economic background, so my socio-economic background is was backward, and as I said, I was studying in a Sarkari school, and there were no facilities, like advanced facilities. We were sitting in a same class like for uh, so like for like four standard student, like first standard, second standard, and third standard, fourth standard, we all students used to sit in one class, and the teacher used to sit in the middle, and they used to teach us in that background, but it was quite adventure for us as well. Okay, so after 12th, I did my graduation in hotel management from Nagpur and from Open University.
And then in 2016 and 17, I was in Nalanda Academy, and I was trained there for higher education. And later I made my path to study in Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, where I did my Master of Science in Climate Change and Sustainability Studies. It was a complete shift from my previous degree from hotel management to climate change, and I didn't know about it before. And but at Nalanda Academy, I was introduced to lots of many things, including the environment and geography, history, and climate change as well. And after graduating from after my master's from Tata Institute of Social Sciences, I did I started my job as a researcher in an NGO based in Pune, and I worked there as a researcher for 2 years in climate change conservation and communities project. And later, I was a program and project manager with another NGO called Guardbook Conservation Foundation, and I was working on climate change, conservation, water, and communities with the Forest Department of Ranthambore Tiger Reserve in Rajasthan. And side by side during uh, my job, I started like preparing for uh, abroad education, and it took me like almost 2 years to working and uh, preparing for it, like gathering all the documents together, and like searching for the universities and the courses. And after like 2 years, almost 2 years, I received uh, I received offer letters from two universities. That I received an offer letter for masters from Australian National University, and a PhD offer letter from University of Manchester from UK. And so, but now like I choose this masters because I worked in a forestry and biodiversity domain for 2 years, and I developed my interest in biodiversity and forest conservation. So I thought this would be a great opportunity to uh, get like skills and excel my knowledge in the field. And so that's why I'm here. I'm doing my master's in forestry advance. Advance is basically the research degree in Australian National University, Canberra. And yeah, so that was my like profile or about me. And if you have like any questions, you can like just type after this session, and you can also like unmute yourself. So let's get started about like how do I do my things. Yeah, so as you can see, there are lots of questions, and the two guys in the PPT. I hope I think most of you are thinking about the same. Like, and I also went through this process, this phase. Like, oh, I was very scared. How do I write my SOP? Uh, how to decide my research topic, and what to prepare, how to prepare for IELTS, and for my PhD application, how to write an proposal, what will be the application process, and how will I approach the professors for my master's thesis and my PhD as a for supervising myself. Uh, and so I'll be touching how I overcome these temporary challenges. I would say these are temporary challenges. So in next few slides, I'll be sharing my experience and how did I do it. Okay. So about the English language, as I didn't, I studied in a local medium until 12th standard, and after during my graduation as well, our syllabus was in English, but the teachers and professors used to teach in Hindi.
So when I was in TIS Mumbai, I faced lots of difficulties, but thanks to Nalanda Academy, like they gave us the base to survive. Like they introduced basically us to the English language jargons and lots of things, and like how to read, what to read, and so lots of things. So English, I would say this is subjective, and practice is the best method to improve your English language. And it is subjective because everyone has their own abilities and skills to adapt new things, right? And so like the way uh, I excel myself, or I learn English, or learn to like talk and write by watching English movies, and like reading newspaper and periodical articles. Um, so like I would suggest you to like read newspapers or periodical articles from English media, and also like watch movies and series just to understand the language, and just to familiarize yourself with the English words. And as you go with it, the words will be like rolling in your mind, and as it will be repetitive, you will start to like remembering those words. And about the fear of doing something, like fear of appearing for the IELTS interviews, or speaking, or like writing any reports, SOP, or statement of purpose, or personal statement. So I would say just do it. लाइक हिंदी में कहते हैं कि मतलब पछताने से अच्छा कर लो. तो I would say कि just do it. And and if you do it, you can just start with the scratch, start with very rough idea. Like if you are writing anything, if you are preparing for anything, so for example, if you are writing, just write all your rough ideas on a page or on a computer, and then revisit it and redo it. And like after after your few visits, the document or the your idea will convert into like very robust or comprehensive uh, 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 idea. And about the statement of purpose, and this is also called as like in many universities, this is also called as personal statement, statement of purpose, or letter of intent, or letter of interest. So lots of people, and I was also worried about like what to write, how to write, uh, and where to start. So after researching and after talking to lots of people, so everyone will like, including myself, I will give you different example. And if you ask another, they will tell you differently. But I will suggest you to like gather as much as information you want, or you can take from people, or from the internet sources. So about the SOP, like uh, explore and like search about it, what is SOP, how to write SOP, so that you will be clear about like what is the purpose of SOP, what things to include. And then you can start writing about it. And and then after like uh, writing your SOP, I would suggest you to take help from experts, or people who already are in abroad, to like go through your SOP, and to just proofread your SOP, just to make it like more robust and comprehensive. So the things you can include in your SOP is like paragraph by paragraph. So in first paragraph, you can write your personal background. This is like mandatory. You can write your personal background, and then personal background, like what are you working on, or what did you study, just like a summary of yourself. And and then uh, if you wanna add a financial background, you can add like financial background, but this is not mandatory. And uh, uh, and also like uh,
your SOP should have your immediate and long-term goals, and your academic details and interest and hobbies. And also, if you have professional experience, it's very good, and it's very helpful to put your professional experience, so that the um, uh, the professor or the university, they'll get to know that you have already been working in the similar industry or the similar field, and you can and you like already spent your time, and you will be like you will be having like lots of new information that they can use, or you can use in your academics. And reasons why you wish to study at a particular institution or university, and reason for being interested in chosen field. So for example, my field, I choose to study forestry at this university, and I gave my reason because I was working for 2 years in the forestry and biodiversity conservation field as a researcher. And I put this paragraph in my SOP, and write any curricular activities or your hobbies, or uh, hobbies that are like relevant to your academics, or in general. And if you have any published work or research papers, it's very good to include it in your um, uh, in your SOP. And I would say, to just make it robust, I already said it, and just to make it very robust and comprehensive, it's just like going to the gym, and just like doing exercise. So you have to just start from scratch, think what the thing, or what are the different things are in your mind, just to pencil it out, pen it out, or chalk it out on a piece of paper, or in your laptop, and think, write it, and just repeat it, go through it, and you will yourself get to know like what my SOP is lacking, and what words or um, um, jargon should I use, like academic jargon should I use. And about IELTS, so I didn't give any English language test, or any English language test or GRE. For IELTS, I got exemption from both the universities, from Australian National University and the University of Manchester as well. And I'll tell you how I get that waiver. And about the IELTS, it's again like subjective, and practice will make you perfect. And lots of people get like uh, good hand in practicing for IELTS, like then listening, writing, speaking, and what else is there? I forgot. So for listening, movies, lots of movies, like watching movies, and um, like open source, there are like open source softwares, like mobile softwares to that will help you appear for practicing for IELTS preparation. So I think I will be not the best person to know about IELTS, because I never I never appeared for it. And so uh, and reading as well, reading English newspapers and articles will be very helpful for it. And reading English newspapers will also help you to know some vocabulary, like new vocabulary. You can use that in your writing passages in the IELTS or PT. And about the proposal, that one of the barrier, like temporary barrier, I had for my PhD. So I was very worried, like how would I write a proposal, what to include, and uh, what area I'll be interested in. So I asked lots of people. I gather as much as information I can, and
I and then I started like working on the area of interest, or area of interest I'm I'm interested to work in. So I started reading like books, not books. From this line, it is appearing that it's a lots of work, like reading books. Books is like that much books, but no, I think you don't have to read the books. You just go through the introduction and abstract and the conclusion or the summary of the books and papers, so that you will get to know what the paper or what the book is saying, and you can like chalk out the ideas or gaps or solutions in it. And so about your area of interest for your masters, or if you are planning for your master's research degree. So many universities ask you for the proposal, and so reading books, papers about the area you are interested in is a good start to like work on your proposal. And from these like books and papers, you can chalk out your takeaway, like it mentioned, or write down the issues you find, any gaps, or any solution to any problem you find, and write it down. And prepare a, like go through the format of how for format of proposal, and write it down, get proofread by someone else, like other experts or the people who already doing PhD. And it's again the gym strategy, like you will have to think, write, and repeat, like write, read, and I would like to share my um experience, one of my experience. So I wrote an email to this professor, Dr. Olde Cope, for my PhD at Manchester University, and I write this paragraph in the email. So in first paragraph, I give my introduction, that uh, who I am, I'm my name, and I'm interested in doing the PhD from that university. Then in the second this is also helpful if you are applying for masters as well, and this details or this content you can also use in your SOPs. So on May 31st, I wrote this email. I sent this email to him, and in the second paragraph, I write my background, the education, and my experience, and uh, and also like here it's good to like mention the projects you are working on. I mentioned that I was a manager at the NGO and worked on climate change conservation, communities, and water projects in Ranthambore Tiger Reserve, Rajasthan. And also, if you have any achievements during your academic career or your professional experience, you can mention it here. Like I mentioned here, like I have been awarded as a best employee for my contribution at at my workplace. And then in the third paragraph, you can mention like about the professor, his research interest, and what you want to work on, and how what you want to work on, and uh, what motivates you to work in this field, and how your area of interest and the professor's area of interest is matching. And um, it will be great opportunity to do the PhD under your guidance, and something like that. And this is the closing paragraph where uh, you have to like I have mentioned like uh, how my research will contribute to the betterment of the society or the environment. So this is the mail I sent to the professor. And on June 3rd June, I received the application, the response from the professor, and he said that his area of interest and my area of interest are like very similar, and he will be happy to supervise me
in the in in my PhD project. So this is like the example that I went through. And before, like, yeah, before approaching professor, I almost forgot, sorry for that. Or approaching your professor, or finding the university you are interested in, go through the profiles and interest of the professors. Like, it's mentioned, it's available on the university website. And about your courses as well, all the information you needed, it's already there. You just have to mine for it. You just have to, like, search and like write down or make a document and mention everything in it, so that in future as well, like after a gap of like weeks or months, you won't be uh you won't be new to this thing. And so it's very easy. The process is not complicated. It's very easy. Just we have to just mine it. Just just get to know about this, like I like the knowledge, what is required and what do we have. Yeah, and the documents for your application should include, or if you are approaching your professors for PhD, send your email with your updated CV, scan a copy of transcripts if you have, or your mark sheets will also work, and degrees and any other relevant documents like work experience certificates or anything. So these are like some suggested documents that you can use. Yeah, so for the application for your masters and PhD application, so you have to make your account on the in the university system, and you can make it through their future student tab, and make your profile, and in that account you have to basically mention your background, education, experience and projects you have worked in, and etc etc. And sometimes they ask you for the documents like the transcripts, the degrees, letter of recommendations, or they will ask you for the link that they will send a link to the persons or the professors or people you have given for your letter of recommendation, and CV, statement of purpose, or personal statement, or letter of intent, or letter of interest, and any other supporting documents. You have to like submit it through their portal. And about the letter of recommendation, lots of universities they ask for letter of recommendations, or some universities ask for the ask for the details of your referees, so that they can send the email link email link, and they will be asking about ourselves to your referee. So for these people, like the referees, choose it wisely, that the people you know or you have worked with already. Like if you so I was working in this NGO, Applied Environmental Research Foundation, and I gave like my founder's detail, because I knew that he and she will be writing good about me. And so the referees play important role in our admission process as well. So I have attached these screenshots of these documents. So these are the documents on which I got my English language waiver. So I didn't as I told you already, uh, I didn't appear for the IELTS or PLT or PTE, or any English language test. I just ask them and request them to give me an waiver or exemption in English language, and I supported my request through this documents, in which they mention that this like Jyotirao Wankhede is associated with this organization since 2019, and then in the last line they mentioned that our official and major communication language is English. So this is better. Like sometimes they believe that
Okay, yeah. So he's been working there for 2 years, and yeah, the major communication, if the major communication language is English, then it's okay to give him or her um, the waiver or exemption. And lots of university, including my university, ANU, they have like um, criteria. If you done your previous education or previous degree within last 3 years or 4 years and in English medium, then you don't have to appear for the English language requirement test. And I was in that criteria, and I use these documents as well to support as a support. And this is the certificate from my university, TIS Mumbai, that the medium of instruction of language at this institute is English. So this is another like good and official supporting document to which helped me in my admission process. Okay, and these are some of the links that I use during my application process. So these are online websites, study portals, and findaphd.coms or findamasters.com. And you can use this for finding your university. So there are filters in which you can filter your search by your area of interest, like social sciences or science or biodiversity or engineering or IT software. And then you can filter out your uh, countries, universities, and lots of things. And that will give you like precise list of the universities or the courses you can do or you are interested in. So I thought these will be useful links, and that's it. So now I'll be taking questions, and if you have any question, just don't worry and just tell. I'll, Thank you, Jyotirao. I'll It was a very informative session and you presented very well. So now, students, you have any question or any queries, please write in our chat box or you can raise your hand. So I'll be unmute you. So you can directly ask to Jyotirao. अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो या तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा. So, okay. So we have a question, Jyotirao, in our chat box. Yes. Harshal is asking why X cities you to take conservation as a Oh, subject. okay. What excites you? So Harshal, thanks for the question. So um, I did my like post graduation from TIS as in climate change and sustainability studies, and I did my master's research thesis on uh, sustainability of community forest resource management in India. And after that I also worked in as a researcher in one of the forest and biodiversity conservation firm, and that helped me a lot. That basically sets my base, and that's basically helped me develop my interest to go for conservation. And as I already did my education in climate change, and I was familiar with the great impacts on the conservation and great impacts on the biodiversity on forest, and ultimately from this forest and biodiversity impact, ultimately we the people will be impacting from it, and it's very severe, and that's basically excites me to work in the conservation domain to protect and save species and forest. Thank you. That was a great question. Thank you, Jyotirao. Anyone Yeah. else have any question or query, please ask. So जब तक ज्योतिराव ये पूछते हैं, so I have a question.
What are the हाँ job हाँ opportunities after doing masters in forestry in Australia and in India? yeah. Thank you. That's what I am also thinking about. But there are lots of opportunities, and so I'll just I'll just uh, uh, share about the opportunities in Australia. So after I I will do my degree, I'll be able to join the contractual positions with the government as a forester, as a forester, or as a ranger, and as a researcher as well in lots of universities and lots of NGOs, and uh, uh, and internationally there are lots of international NGOs like United Nations Environment Program or United Nations other programs and other wings and World Bank, and there's UNFCCC. They also hire lots of people on different domain like biodiversity, conservation, and environment. So that will be the opportunity and scope for me. And in terms of in India, like the uh, the firms and the NGOs or the companies I was working in India, they already like said, you will be happy, we will be happy to work with you again. Uh, and yes, in India as well, like I can work with the government as a consultant or as a contractual employee to, plan conservation, to plan their conservation strategies, and also with the governments uh, 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 as a uh, as a contractual employee. So it's really a good field, and I love it. uh, I have received one like direct message. Okay, please take it. And, so the message from Ishwarya is, can you send the soft copy for reference? Like soft copy of what? If you write soft copy of what, I'll be happy to share. And Pooja is asking myself, Pooja, I have completed my graduation from English literature. Thus, there is any need to appear for IELTS respected university in Australia. So this is again like subjective. If you meet the criteria that I already shared. Check for the university you are interested in, and check for their English language requirements. And lots of universities says like if you have done your previous education in full English or English medium, you don't have to appear for any English language exams. And check for these universities and their criteria, and make I will suggest you to make the documents as I shared, that your previous education, the medium of instruction at your previous education like was English, and it will help you to get a waiver. And if you have any other questions, please don't bother, just shoot your questions and I'll be happy to answer. Please don't be hesitate. Please ask your question and queries. So we Yeah, please ask. आप अभी जिस फेज में हो, जिस स्टेज में हो, मैं भी उसी स्टेज से गया हूँ। तो मैं भी काफी ऐसे मतलब मुझे कुछ क्वेश्चन रहता था, तो मैं कुछ भी सेशन रहता है तो उनमें क्वेश्चन पूछता था कि जो भी है डाउट है तो मैं पूछता था, ये नहीं मुझे समझ रहा है, वो नहीं समझ रहा है, और पीपल हेल्प, और इसी से मतलब मेरा क्लियर होते गया, मेरा आइडियाज क्लियर होती गई। Right. और मुझे 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 हेल्प हुआ ये सब मतलब चीजें टैकल करने में, और राइट उनको फिर मेरे उसके हिसाब से मुझे मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस प्लान करने में।
Sir, Okay, I have a direct message from Praveen as well. So he's asking, how do you find Australia study culture? Okay, anything you would like to tell about immigration related issues? So I won't be able to say anything about immigration issues if you अगर प्रवीण भाई आपको कुछ पर्टिकुलर इशू के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन इमिग्रेशन रिलेटेड इशू या मतलब डायरेक्टली मतलब कौन से इमिग्रेशन रिलेटेड इशू, तो वो अगर क्लियर हो जाएगा तो सही, मतलब मुझे आंसर करने में सही लगेगा। और ऑस्ट्रेलियन स्टडी कल्चर, इसके बारे में तो अभी मतलब ऑलमोस्ट दूसरा सेमेस्टर मेरा खत्म हो रहा है, तो यहाँ का स्टडी बहुत ये है, मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत रोबस्ट है, बहुत अच्छा है। मैं बोलूंगा एटलीस्ट रिसर्च के लिए तो बहुत सही है। और जो मेरे दोस्त लोग हैं जो आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन ये लोग जो स्किल्स सिखाते हैं वो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल है। मतलब जॉब करते टाइम और आगे भी जाके इतना सही है, सही रहेगा ये सब स्किल्स और नॉलेज हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। आ, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, ऑब्वियसली पढ़ने के लिए आए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे मैं ग्रेजुएशन में करता था कि बस अभी मेरा एग्जाम है और अभी बस एक हफ्ते पहले मैं पढ़ूंगा, वैसा इधर नहीं है, हर रोज पढ़ना पड़ता है। और स्टडी कल्चर काफी अच्छा है, लोग काफी फ्रेंडली है, और कुछ भी डाउट अगर रहता है इधर तो सीधा पूछ लेते हैं प्रोफेसर को, सर वगैरह कोई बोलता नहीं है, सीधे नाम से पूछते हैं। और और काफी मजा आता है पढ़ने में, एटलीस्ट ऑनलाइन नहीं कर रहा हूँ मैं और मतलब इस बार बॉर्डर खुली है तो हम लोग ऑफलाइन जा रहे हैं, तो सही है। So, Jyotira, we have few questions in या our chat box. Okay, हाँ, Harsal is asking, what are the difficulties you faced in TIS? टीस में टीस में इंग्लिश, राहुल भाई को भी पता होगा सबसे पहला तो इंग्लिश था। और फिर टीस में हम लोग लेक्चर में बैठते थे तो प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कुछ जार्गन्स यूज करते थे, कुछ कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज करते थे, वो एकदम सर के ऊपर से नहीं, वो हमारा क्लासरूम के ऊपर से जाते थे, मतलब मेरे लिए तो समझता नहीं था, तो उसके ऊपर वो समझने के लिए हमको अलग टाइम देना पड़ता था, वो वर्ड्स और वो सब चीजें। और बाकी कल्चरल शॉक था थोड़ा, हम लोग गांव से सीधा बॉम्बे सिटी ऑफ ड्रीम्स पढ़ने गए थे, तो कल्चरल शॉक ऑब्वियसली उधर था, लेकिन ओवरकम हो गए सब डिफिकल्टीज, और फॉर्चुनेटली हम लोग सब पास हो गए, राहुल भाई ग्रेजुएट हो गया, मैं ग्रेजुएट हो गया। या So, we have a question from Tanis. He is हाँ, asking, are there any criteria for mask for higher studies? Marks का कोई criteria है क्या? मार्क्स का ये तनिष्क का ये मार्क्स का जो है, मार्क्स मार्क्स का भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। और जैसे मेरा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आई थिंक वो लोग मार्क्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि फिर वो लोग मेरिट लिस्ट लगाते हैं, तो अ, यहाँ पे मेरा आउट ऑफ सेवन जो है मेरा 5.75 मेरा मतलब प्रीवियस डिग्री का मार्क्स इन लोग ने कैलकुलेट किया था बेस्ड ऑन माय प्रीवियस ग्रेड्स। तो कभी कभी रहता है कि एटलीस्ट 60% चाहिए, एटलीस्ट 55% चाहिए, किस किस यूनिवर्सिटी में 70% भी मांगते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, लेकिन एएनयू के बारे में मैं बोलूँ तो वो लोग एटलीस्ट 65% का देखते हैं आपके, अगर प्रीवियस डिग्री में लाइक 60% है, एटलीस्ट 65 है, तो वो लोग थोड़ा देखते हैं। और कभी कभी आपका अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो लोग फिर मार्क्स का नहीं देखते, ले जैसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका प्रोफाइल भी मैटर करता है इन चीजों में। Okay. We या have one more question from Tushar. He is हाँ asking, हाँ, how many packages of climate change field? ओके Maybe. पैकेज, तुषार भाई पैकेज इन टर्म्स ऑफ लाइक पैसा पैसा मनी, हाँ मनी भाई। हाँ, I think मुनि भाई. ओके, सो अच्छा खासा मिल जाता है, दाल रोटी आपकी निकल जाएगी अगर कर रहे हो क्लाइमेट चेंज में तो अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब सही है। अभी अभी काफी बूस्ट पे है ये फील्ड,
दाल तो रोटी मतलब कौन सी दाल, मखनी या फिर प्लेन वाली? अरे बटर वाली, घी वाली दाल। हाँ। हाँ। तो अच्छा मिलता है, मतलब मेरे दोस्त लोग हैं जिनका ऑलमोस्ट 9-10 तक पैकेज है, जिन मतलब जो अभी काम कर रहे हैं इंडिया में। गुड। हाँ। सो बाकी और किसी का अगर कोई क्वेश्चन? हाँ, कंटिन्यू हाँ, कंटिन्यू। और अगर कुछ होगा तो प्लीज प्लीज आस्क क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, पूछिए पूछिए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का मतलब किसी भी तरीके का मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। हाँ, और मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो सही है। लास्ट सेमेस्टर अगर पूछा रहता तो मैं बोला रहता कि मत आओ इधर। लेकिन इस सेमेस्टर काफी अच्छा है, काफी अच्छा। करोड़, 9 to 10 करोड़। हाँ, विष्णु भाई पूछ रहे हैं 9 से 10 करोड़ क्या? भैया अभी मतलब जान जान ही ले रहे हो आप। विष्णु भाई। नहीं नहीं नहीं। Is cold email works for you? What does it mean? Cold email. ओके, ज्योतिराव, ये दर्शन हैज रेज हिज हैंड। सो दर्शन, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। अरे ये मेरा दोस्त है एक्चुअली। हाँ, कोई बात नहीं। मेरा गल यस दर्शन, प्लीज मेरा आस्क। कोई प्रश्न नहीं है, ऐसे ही मैंने रेज हैंड किया। अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्त। आप So we have one more question. Sampath, I had done my graduation in social work. According to you, हाँ हाँ। what course suggest me? What would you suggest him? He has done his graduation in social work. ओके, सोशल वर्क तो मास्टर्स के लिए सोशियोलॉजी काफी सही रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया में तो मतलब काफी डिमांड है सोशल वर्क का, सोशल वर्कर्स लोगों की। और काफी यूनिवर्सिटीज में सोशियोलॉजी और आर्ट्स एंड साइंसेस के कॉलेजेस में सोशल वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीजों में इन सब के लिए काफी अच्छे अच्छे कोर्सेस है। लेकिन मुझे लगता है राहुल भाई आप अच्छे से बता पाओगे इस फील्ड के बारे में। एक्चुअली इसमें संपत, आप मास्टर्स भी कर सकते हो सोशल वर्क में। हाँ और इसके अलावा बहुत से लोग जो मेरे साथ में पढ़े हैं और मेरे साथ में स्टडी किया है, इवन मैं भी, बहुत से लोग सोशियोलॉजी फील्ड में या फिर एंथ्रोपोलॉजी फील्ड में स्विच करते हैं अगर स्विच सोशल वर्क से। तो आप भी एक बार हाँ देख सकते हो अगर आप। और ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आपका इंटरेस्ट क्या है। सोशल वर्क में नहीं है, बिजनेस में जाना है या एमबीए करना है, या फिर हाँ कोई डेटा साइंस में रिलेटेड कोई कोर्स करना है जैसे, या फिर अपने ज्योतिराव फॉरेस्ट्री का कर रहे हैं, मास्टर्स फॉरेस्ट्री में, तो उस तरह से करना है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एक्चुअली। राइट। हम्म। Tanishq again. What is the package in social work there वेयर? हियर? or in Australia? Hmm. The minimum, like the minimum packages for all the fields are like um 60, I would say 70,000 Australian dollars Per annum? annual। Annual, okay. हाँ, पर एनम। हाँ, मिनिमम मतलब फिर वो तो अपना स्किल्स, बैकग्राउंड प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है अपने को कितना मिलता है। लेकिन 60-70 का आई थिंक एटलीस्ट सबको मिलता है, विच इज अ लॉट इफ यू कन्वर्ट इट टू इंडियन रुपीज। Sangrakshit. हाँ, I completed BSc, so can I join to climate change and sustainability program? इंटीज। हाँ, न तो इसके बारे में आपका अगर बीएससी हुआ है, मतलब प्लेन बीएससी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी वगैरह,
तो आप अगर करना चाहते हो क्लाइमेट चेंज तो काफी अच्छा रहेगा, और आपके लिए काफी सारी चीजें फैमिलियर भी होंगी। मैंने तो होटल मैनेजमेंट किया था तो मेरे लिए सब नया था, लेकिन फिर बाद में सेकेंड ईयर में थोड़ा मतलब थोड़ा बेस अच्छा बन गया, तो अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। और आपके लिए मैं तो बोलूंगा कि बेस्ट रहेगा, क्योंककि आपने ऑलरेडी बीएससी किया है तो बहुत सारी चीजें फैमिलियर रहेंगी, और आपके फर्दर इसके लिए भी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी सही रहेगा ये। और क्लाइमेट चेंज में लाइक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है ये। एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं, वाटर मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, एनर्जी एनर्जी वगैरह वगैरह सब। ओके, संपत भाई बोल रहे हैं आई डोंट वांट टू गो अगेन इन सोशल वर्क, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। एंथ्रोपोलॉजी मुझे लगता है जैसे राहुल भाई ने बोला, एंथ्रोपोलॉजी एक अच्छा ये हो सकता है। मतलब मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता है एंथ्रोपोलॉजी, मुझे काफी पसंद आने लगा अभी। मतलब कि यही लोगों का कल्चर जानना, अलग अलग सिस्टम्स प्रैक्टिसेस वगैरह वो। और सोशल आप अगर अपना, यस यस यस, संपत भाई यू कैन स्पीक। Please raise your hand so I will unmute you. या Yes, Sampath, you can ask. Hello, Hello, Sampath. I'm Yes, audible. yes, yes. As I mentioned previously, I have done my graduation in social work, but I'm यस planning to go in development studies or labor studies. हाँ हाँ। According to you, which university best for me? आ, तो आप इंडिया में करना चाहते हो या इधर बाहर? No, no, outside India, बाहर से. अब्रॉड में, ओके। मुझे लगता है डेवलपमेंट स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स काफी अच्छा है यूके में, डेवलपमेंट स्टडीज के लिए। और आप जो बोल रहे हो सोशल वर्क, उसके उसके बाद डेवलपमेंट स्टडीज, लेबर स्टडीज भी काफी अच्छा ऑप्शन है। और यूनिवर्सिटीज के मतलब एक्चुअल यूनिवर्सिटीज के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये डेवलपमेंट स्टडीज के लिए यूके काफी अच्छा ऑप्शन है, और यूएस भी काफी अच्छा ऑप्शन है। मैंने लास्ट ईयर एडिनबर्ग के लिए अप्लाई किया था सोशोलॉजी के लिए. हाँ इवन हाँ मुझे ऑफर लेटर आया है, मतलब यूनिवर्सिटी से. हाँ। बट मैंने जो आईएलटीएस का जो एग्जाम नहीं दिया था. ओके, तो आपको तो कंडीशनल ऑफर लेटर मिला है फिर अभी? हाँ. ओके, तो दैट दैट क्योंकि दैट्स गुड, लाइक और मेरा जो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो तो हो जाएगा क्लियर। बट जो मेरा जो बैचलर में जो एक्सपीरियंस है सिर्फ सोशल वर्क का था, और मुझे सोशोलॉजी के बारे में कुछ आइडिया नहीं था. हाँ हाँ तो मैंने अभी 5-6 महीने से थोड़ा बेसिक जानने की कोशिश की थी सोशोलॉजी की. इवन मैंने जेएनयू के लिए अप्लाई भी किया था, जो सीयूसीटी के हम्म। लिए. सो वो भी मेरा क्लियर हुआ है. बट ओके मुझे ओके। अब्रॉड में जाना है. एब्रॉड, एब्रॉड मतलब आई वुड सजेस्ट कि अच्छा ऑप्शन रहेगा। और आपका कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में ना? हाँ. काफी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। टिस के कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स कर रहे उधर सोशल वर्क में, एडिनबर्ग में, शायद सोशल वर्क या फिर और कुछ डेवलपमेंट स्टडीज में वगैरह। तो वो लोग तो बोल रहे कि काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है। बट और जैसे कि मतलब सोशियोलॉजी के लिए जैसे फेमस है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. हाँ हाँ तो वहां पर भी मैंने अप्लाई किया था, बट वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया था. फिर मैंने ओके। ट्राई नहीं नहीं हाँ, किया. मतलब काफी मतलब ऑक्सफोर्ड तो ऑफ कोर्स, लाइक ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सब एकदम टॉप यूनिवर्सिटी है। इसमें तो कौन सा भी कोर्स एकदम मतलब एकदम टॉप लेवल का ही रहेगा।
तो इनमें अगर मिल गया तो काफी सही है। लेकिन जैसे एडिनबर्ग है आपका, और जैसे यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी काफी मैटर करता है कि अ, जैसे कौन सा यूनिवर्सिटी किस रैंकिंग पे है, उनकी रैंकिंग भी मैटर करती है उनके कोर्सेस के बारे में, आई थिंक। तो इसके तो बारे में ना संपत भाई आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा आप रिसर्च करो। जो मैंने दो एक कम मैं करता हूँ, वो जो दो ये है, दो नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ लिंक्स चैट बॉक्स में। वो जो 3 ओके लिंक्स मैंने बताई थी, तो उसमें क्या कर सकते हो आप जैसे डेवलपमेंट स्टडीज आपने बोला, तो भाई क्या, हाँ, तो ये तीन लिंक्स है इसमें। findermasters.com या फिर स्टडी पोर्टल्स में आप अपना डेवलपमेंट स्टडीज या फिर लेबर स्टडीज ये फिल्टर लगा के आप यूनिवर्सिटीज ढूंढ सकते हो। तो वो आपको आपके सब्जेक्ट्स या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक आपको वो यूनिवर्सिटीज के नाम देगा। और उसमें फिर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत लेना पड़ेगा कि मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सा यूनिवर्सिटी का कौन सा रैंकिंग है, कैसा रैंकिंग है, तो वो आपको मे बी हेल्प करेगा और काफी। मैंने हाँ तो एलएससी के बारे में सुना था जो, हाँ। तो वो कैसा रहेगा, मतलब लंदन स्कूल ऑफ ए, इकोनॉमिक्स। हाँ हाँ हाँ, एलएससी। एलएससी तो काफी अच्छा है। मैं जैसे बोला, ये सब टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज है, और इन सब में अप्लाई करने के लिए मैंने ट्राई नहीं किया। तो इनका इनका एप्लीकेशन प्रोसेस भी मुझे उतना पता नहीं है। तो अगर राहुल भाई के थ्रू अगर कोई होगा उधर, मतलब यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बाकी यूनिवर्सिटीज में सोशल साइंस और ये आर्ट्स रिलेटेड डिग्रीज के बारे में, तो राहुल भाई आपको शायद इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अगर आपको हाँ चाहिए तो। हाँ, और एक्चुअली संपत होता क्या है, एक्चुअली आपको पूरा रिसर्च ही करना पड़ेगा आपके फील्ड के डेवलपमेंट स्टडीज को लेके कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, वो आपको हाँ पूरा शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा किन किन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हो। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग और एफर्ट्स चाहिए इसके लिए। हाँ। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा उनके क्राइटेरियाज क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आप उनके रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब आपको ही करना पड़ेगा। एक्चुअली हम आपको एक दो यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं, लेकिन हाँ हाँ। उतने से ही नहीं होगा, आपको उसके अलावा भी अल्टरनेट ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। हाँ, सो मैंने सही कुछ बात है। 10 यूनिवर्सिटी के नाम्स और जो कोर्सेज रिलेटेड जो क्राइटेरिया मैंने चेक किया है, जैसे हम्म एलएससी हो गया, किंग्स, ऑक्सफोर्ड, और उसके बाद आईडीपी और हम्म। ससेक्स, और बस ये जो मैंने सर्च किया है। बट अगर इन यूनिवर्सिटी से अगर मुझे ऑफर लेटर या फिर कंडीशनल अनकंडीशनल लेटर आता है तो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है। तो आप, वो डिपेंड करता है आप कहाँ कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर GIPMS, GAA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप के लिए। एक्चुअली इनका कुछ क्राइटेरिया रहता है। ये अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कॉलरशिप है उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज है, कुछ रैंकिंग है, उनके अंदर अंदर आपको आता है तो आपको मिल हम्म। जाता है। और ये लास्ट ईयर 32 टॉप 40 यूनिवर्सिटीज थी महाराष्ट्र में की स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था, उन लोगों को मिल गया था। अगर आपकी हाँ। यूनिवर्सिटी उसके अंदर आता है तो यू विल गेट इजीली स्कॉलरशिप। राइट। ठीक जैसे है। जो संपत आईडीपी संपत है। संपत प्लीज थोड़ा सा अभी, हम बाकी लोगों भी क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। ये एक्चुअली पर्सनल चैट टाइप हो जा रहा है। तो ओके ओके आप ओके। एक बार काम कीजिए, मैं आपको अपने नंबर दूंगा, तो आप हम्म। वहाँ पे आप, या फिर मैं ईमेल आईडी लिखता हूँ, आप उस पे अपना क्वेश्चन और क्वेरी डिटेल में अगर लिखेंगे तो हम रिप्लाई करेंगे। और बाकी यहाँ पे लोगों को चांस नहीं मिल पाएगा अदरवाइज। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। ठीक है। हम्म। चैट बॉक्स में क्वेश्चन है भारत भाई का। जिनके डिग्रीज में 50% से कम है वो कौन सी स्कॉलरशिप लेके फॉरेन में जा सकते हैं? भारत भाई, आपको ना ये
हाँ, आ, आपको ये जो स्कॉलरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे पता पड़ेगा। तो जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कॉलरशिप है उनके लिए शायद एटलीस्ट वो लोग 55% या फिर 60% मांगते हैं। और भी अगर और भी अगर कुछ स्कॉलरशिप होगी तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। मुझे स्कॉलरशिप्स के बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, आपका प्रोफाइल अच्छा है और आपको अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो आप यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो। काफी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी इस बार 50%, 75%, 25% स्कॉलरशिप मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग स्टूडेंट्स को। तो आप यूनिवर्सिटी की भी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। और नोस और महाराष्ट्र स्कॉलरशिप का ये है कि महाराष्ट्र स्कॉलरशिप में आप 50% है अगर आपके ग्रेजुएशन में, तो मैटर नहीं करता 50 है 60% है, लेकिन उसमें ओ, यूनिवर्सिटी का रैंक मैटर करता है। अच्छा अच्छा, और हाँ, हाँ, बढ़िया, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आपका ग्रेजुएशन में 60% कंपलसरी है। ओके, थैंक यू राहुल भाई। वेलकम भाई। सो एनीवन, those who have question or queries, please ask. We have a हाँ time so we can take your question. हाँ, विष्णु भाई बोल रहे यूट्यूब पे क्वेश्चन है। 2 मिनट, हम यूट्यूब के भी क्वेश्चन लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ओके। तब तक ज्योतिराव आपकी तरफ से आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो। हाँ हाँ हाँ, मैं बोलूंगा बाहर पढ़ने आओ। काफी काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बस सिर्फ पढ़ने के रिगार्डिंग ही नहीं, काफी कुछ सीखने को मिलता है। आपका सोशल नॉलेज काफी बढ़ जाएगा। आ, आपको नई नई चीजें पढ़ने को सीखने को मिलेगी और यहाँ का कल्चर समझने में, और आपका मतलब बेसिकली थॉट डेवलपमेंट प्रोसेस काफी काफी अच्छा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इतना ओपन कल्चर है हमारे यहाँ पे। थोड़ा हायरार्किकल है यहाँ पे, काफी ओपन है। तो एक नया नया एनवायरनमेंट में आपको रहने को मिलेगा इधर। बाहर जाओगे, पढ़ने को जाओगे, और इसके साथ साथ नॉट ओनली academic, in terms of financial and economy as well, आपको काफी अच्छी ये मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप पढ़ने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हो पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ पे, क्योंकि यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ की कंट्री, यहाँ की जो करेंसीज है इंडिया से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये पढ़ने के साथ साथ आप पैसे अगर कमाना चाहते हो उसके लिए भी काफी सही रहेगा, इफ यू वांट। थैंक यू ज्योतिराव। सो प्रवीण, हम नया बैच ब्लूबर्ड का जब स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम अपने नालंदा एकेडमी के और डिजिटल नालंदा के फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे हम उसका नोटिफिकेशन डालते हैं। तो जब आपको थोड़ा सा वॉच रखना पड़ेगा पेज पे कि कब हमारा नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप तब उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम शुभम। हेलो सर, एज यू सेड यू हैव रीड सम बुक्स एंड रिसर्च in your domain. As social science student, can I get some names of books, or how can I find books to read in my domain? इनको बुक्स के बारे में जानना है, किस तरह से वो पढ़ सकते हैं, क्या पढ़। सोशल वर्क के बारे में, सोशल साइंस। सोशल साइंस, ऐसे पर्टिकुलर बुक्स तो सोशल साइंसेस के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं सोशल वर्क, सोशल साइंसेस पढ़ा नहीं हूँ। लेकिन आपने गूगल भी करा ना कि बुक्स फॉर सोशल साइंसेस, तो गूगल आपको एकदम बढ़िया रिकमेंडेशन देगा, 5 स्टार रिव्यूज, कि कौन सी बुक्स अच्छी है और जो इस फील्ड में
सोशल साइंसेस वाली फील्ड में अगर आपके कोई परिचय के है, कोई दोस्त है, कोई सीनियर है, या फिर कुछ प्रोफेसर है, उनको आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो सॉरी भाई, उस बात मतलब उसके रिगार्डिंग, सोशल साइंसेस के रिगार्डिंग ये नहीं कर पाऊंगा मैं उतना। हाँ, बुक्स के बारे में। ओके, सो निखिल का क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट इज गुड फॉर मास्टर्स इन टिस? सब लोग तो बोलते हैं एचआरएम। ऑलमोस्ट सबका एक रहता है ऑप्शन। एक्चुअली होता हाँ क्या है सबका, हाँ सॉरी, सबका अपना हाँ, अपना नहीं आपको बोल रहा था मैं। हाँ अच्छा, आप बोल। सबका अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि आपके इंटरेस्ट से ये कोर्स मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और आगे आप स्टडी करने वाले हो उस कोर्स में 2 साल, या फिर अपना करियर पूरा आप देख रहे हो उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोर्स या फील्ड चूज करना चाहिए आई थिंक। और ज्योतिबा हाँ, आप बताएंगे? नहीं एकदम सही सही बोले राहुल भाई आप। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसको देख के आप अगर परस्यू करोगे तो बेटर रहेगा। मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें आपको फिर पास होने के बाद काम करने में भी मजा आएगा। जबकि मेरे इसमें ऐसा हुआ था कि क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट पे मुझे पढ़ने का आ, मतलब इंटरेस्ट था, लेकिन उसके बारे में उतना कुछ पता नहीं था, एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज के बारे में। लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ फिर ये फॉरेस्ट्री और बायोडायवर्सिटी के तरफ। तो फिर उसके बाद में मैंने जॉब भी उसी फील्ड में ढूंढा। और अभी मतलब ऑलमोस्ट 5 साल, मतलब पाँच नहीं, 4 साल हो गए। तो इसी फील्ड में मैं मेरा एजुकेशन भी और मेरा प्रोफेशनल करियर भी इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप अपना इंटरेस्ट देखो, और काफी सारे कोर्सेस है, उसमें से आप चूज कर सकते हो। एनीवन एल्स? और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है, या फिर कुछ बताना है, सजेस्ट करना है, तो फील फ्री टू आस्क। हाँ, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, देखा मैंने। ये आपने ले लिए ये? नए, ओके ओके। हम्म हाँ, भारत का क्वेश्चन है। हम्म। भारत बोल रहे हैं कि उन्होंने, अगर ग्रेजुएशन में 50% है, या टीसी हम्म। और 6 और एपीयू में 60% है, तो उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या? नहीं दोस्त, एक्चुअली होता क्या है कि नोस के लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% होने जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, हर्षित has raised his hand. Harshit, you can ask, unmute and ask. ज्योतिराव, मुझे ये पूछना था कि जैसा अभी आपने कहा कि एमबीए किया है, सॉरी होटल मैनेजमेंट किया है, और उसके बाद हाँ एकदम से फील्ड चेंज हुई है, क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ, सॉरी बायोडाइवर्सिटी, हाँ हाँ। नेचर के हिसाब से। तो वो जो चेंज था, तो जो भी जार्गन समझने में मैंने कितना हार्ड जा रहा था, कैसा था वो? आ, बहुत डिप्रेसिंग था मैं बोलूंगा। हाँ, बेसिक, अगर डिप्रेस बेसिक से सीखना, बेसिक से पढ़ना पड़ रहा था ना, तो हाँ हाँ हाँ। मतलब मैं नालंदा एकेडमी में 6 महीना था। तो वहां पे हम लोग फिर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे। तो कुछ कुछ चीजें हम लोग को समझ में आती थी, लेकिन जो जार्गन्स मुझे नहीं समझते थे, मैं एक छोटा सा नोटबुक में कैरी करता था। तो जो भी जार्गन, जो भी फ्रेज प्रोफेसर बोल रहा है,
तो वो मैं लिखते जाता था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ऐसा बहुत बड़ा लिस्ट बन गया था। तो फिर और जैसे एग्जाम में भी वही वर्ड्स आते थे, क्लास में काफी बार रिपीट होते थे, तो वो अगर उसके बारे में पढ़ूंगा नहीं तो फिर समझ में नहीं आता था। तो मैं वो लिस्ट बनाता था और उसके मीनिंग्स अपने नेटिव लैंग्वेज में, जैसे मेरा मराठी है तो मैं मराठी में लिखता था कि वो इंग्लिश वाला वर्ड या फिर जार्गन और उसका मीनिंग। तो काफी चैलेंजिंग था। और एकदम ऐसे तुरंत अगर पूछना है तो मैं मेरे दोस्त लोगों से, मेरे क्लासमेट से पूछता था कि अरे भाई इसका मीनिंग बता। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग चैलेंजिंग तो था। और जैसे यूनिवर्सिटीज का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है ना, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कि हम लोग को सरवाइव करने से सरवाइव करने के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता। तो हम लोग को वो पढ़ना ही पड़ता है उसके बारे में, वो जार्गन्स के बारे में, वो फ्रेजेस के बारे में। तो वो था, चैलेंजिंग था। लेकिन फिर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हम लोग, मतलब सभी लोग, जो फर्स्ट ईयर वाली बैच थी हमारी, सब नालंदा की, और भी हमारे जो दोस्त लोग हैं, सब लोग, हम लोग एक दूसरे की मदद करते थे। और काफी चैलेंजिंग, एडवेंचरस और काफी फ्रूटफुल और लर्निंग वाला ये था हमारा एनवायरनमेंट और जर्नी भी मैं बोलूंगा। So we have some time, so we can take more 2 minutes, two questions only. So if हम्म anyone have any question, please ask. We will take only 2 questions. So I think no one is asking. So I have a question regarding हाँ हाँ भाई। work visa. हाँ भाई। So what is the process of work visa? How easy or difficult to get work visa in Australia after doing masters in forestry? मेरे इसके तो Right. अभी का जो पॉलिसी है, अ, तो अभी तो जैसे ग्रेजुएट होने के बाद मुझे मिलेगा, आई थिंक 5 साल का वर्क वीजा। मतलब आप भी करते हो किसी भी फील्ड से, अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो ऐसा है कि आपको 2 या 3 साल का या 4 साल का 5 साल का आपको वर्क वीजा मिलेगा। और ये स्टेट्स टू स्टेट वैरी करता है। तो जैसे मेरा जो स्टेट है, मेरा है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। तो ये थोड़ा रीजनल है, मतलब रीजनल एरिया है। मतलब रीजनल बोले तो थोड़ा उतना डेवलप नहीं हुआ है, ऐसे थोड़ा रूरल भी नहीं, लेकिन उतना डेवलप नहीं है जैसे सिडनी मेलबर्न, जैसे सिडनी न्यू साउथ वेल्स में। तो वो एकदम ऐसे सिडनी डेवलप एरिया है। तो वहां पे अगर आप पढ़ते हो तो आपको, जैसे अभी कोविड के बाद उन्होंने, पहले 2 साल था तो अभी 3 साल कर दिया। तो 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा। सिडनी में अगर करते हो, मेलबर्न में करते हो तो 3 साल का मिलेगा। लेकिन हम लोग रीजनल एरिया में पढ़ रहे, तो वो लोग बोल रहे कि अरे तुम लोग ऑलरेडी ऐसे अनडेवलप एरिया में पढ़ रहे हो, पार्टी नहीं कर रहे हो, पैसे भी आपको कम मिलेंगे, तो आप थोड़ा 1 साल ज्यादा ले लो इनसे। तो जैसे 3 साल का है बाकी जगह पे, तो रीजनल एरियाज में अगर है, आप कौन सा भी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का डिग्री करते हो मिनिमम, तो आपको 4 साल का मिलेगा। और जैसे रिसर्च डिग्री रहता है किसी किसी का, मास्टर्स बाय रिसर्च, तो उनको 1 साल और एक्स्ट्रा मिलता है रिसर्च डिग्री का। तो ऐसे 4 या 5 साल का वर्क वीजा आपको मिलता ही मिलता है। उसमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको उस फील्ड में जॉब मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो आप बाकी फील्ड में भी कर सकते हो अगर आपको मिला तो। Right. अपॉर्चुनिटीज तो है, 4-5 साल हम लोग इधर रह के अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हम लोग बना सकते हैं। Right. Thank you, Jyotirao. So ऑल please गुड बाय। ask question, queries, anything if you want to ask. हाँ, और मैं एनकरेज करूंगा सबको कि सब लोग सब लोग सब लोग प्रिपेयर करें, सब लोग आए बाहर, इधर आओ, पार्टी करेंगे मस्त। Good. हाँ, चक्षुपाल भाई मेरे बड़े भैया, उन्होंने डाला है रोहित के लिए। हाँ, हाँ, काफी काफी अच्छा लगा, काफी दिनों बाद बात कर रहा हूँ मैं। right. So
Jyotirao, I think we don't have any question from our students for now. हाँ. So I think we can wind up our session for today. Yes. So I would like to thank you again for giving your time to us from your busy schedule. अरे. It was our pleasure to have you here. So thank you, Jyotirao. I'm also like very thankful to you guys, the whole Digital Nalanda team, Anup Sarji and Nalanda Academy and Nalanda family. It was wonderful to share my experience and challenges I faced. And I really look forward to see people from Bluebird and from this session to come and study in abroad. Thank you very much, guys, for bearing me. मेरी बातें पकाने वाली बातें सुनने के लिए. Thank you, Jyotirao. Thank you, bye. Okay. Bye bye. Bye bye. Jai Bhim all and bye bye sabhi Jai ko. Bhim.